वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम ATP का सॉल्ट एनालिसिस वाला सेक्शन करेंगे. Good news that the notes for this will be available to you in the exam paper 4 में for both IGCSE and O levels, which is actually a good thing to do. But paper 2 और paper 1 में of course उसके questions आएंगे, लेकिन वो आपको given नहीं होगा. Alright, so that's bummer. Let's get started with this. Alright. अगर हम पुरानी सेशंस जो हैं, some of you were asking for the solutions for those, so I am working on the mark schemes. I'll share those with you. I'll post the link in the video description. Alright, so let's get started with this. I would suggest syllabus खोल लें और syllabus में आपके पास बिल्कुल end पे जाके you have those analysis notes. I think this is page number 39 of the syllabus document for O levels. तो IGCSE वाला भी similar है, and you can just go and select that. All right? Yeah. Okay, so let's get started with this. Solid L is a mixture of two compounds. The compounds contain the same positive ion but different negative ions. This is actually a really simple question because इसमें हमारे पास we just have to know the test, match it to the notes, and then give the answers. So as you can see, we are getting carbonate ion. Carbonate ion के बारे में we know that if you add acid to this, it breaks down and gives us carbon dioxide. तो इसने HCl add किया है. So there will be bubbles of gas that turns lime water milky. Now when I write it like this, I basically confirm कि मेरे पास carbon dioxide है. So lime water milky. So that's what I know, and that's how I know what kind of gas I have. How to remember the notes, उसके लिए I have a 15-minute video. उसको याद कर लेना. तो उसमें मैंने patterns वगैरह draw करके बताया हुआ है कि how you can easily memorize the video. So that shouldn't be much of a problem. But of course थोड़ा सा वक्त लगता है, time लगता है, और इनको आपने obviously याद करना ही है. There is no other choice there. अच्छा जी. Moving on, to a portion of this dilute nitric acid followed by barium nitrate. Now the thing with barium nitrate is the moment you see, you know that the test is for sulfate या sulfite. Those are the two main ones that we have. So this is going to be sulfate in this case. So I'm getting sulfate here, and that is what I have. Then to a portion of solution from A, aqueous ammonia is added until a change is seen, and you can clearly see over here that you have copper ions. So what's the change going to be? Blue precipitate. And then an excess of ammonia is added, so the blue precipitate remains. What's happening here? I'll probably just restart this. I hope this is better now. Yeah, so blue precipitate, and the blue precipitate remains. So you can say precipitate insoluble, because wait a minute, you're adding ammonia, right? So in ammonia, precipitate dissolves. So there's a very easy way to remember कि कौन सा precipitate dissolve होता है. Here's the thing, crazy cousin. Okay, so crazy, that's for chromium, aluminum, zinc, they dissolve, and in the other one, in ammonia, copper and zinc dissolve. इनके अलावा कोई dissolve नहीं होता. So crazy cousin is a very simple way of remembering which ones dissolve and which ones don't. So this is for sodium hydroxide, and this is for aqueous ammonia. Okay, so these are the two that dissolve in aqueous ammonia, and these are the three that dissolve in sodium hydroxide. Of course, these are ions, these are not metals. ठीक है? The notes given to you in the exam will be the 2 pages at the end of your syllabus booklet. So for O levels, I think ये मैंने अभी यहाँ पे I've opened it. This is page 39 of the syllabus booklet. So वो 2 pages आपको given होंगे जिसमें सारे टेस्ट और ऑब्जर्वेशन है. What this means is कि वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे थोड़ा सा घुमा फिर आगे पूछेगा. बट अभी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है. Alright? Alright. Solid L is a mixture of two compounds. The two compounds contain the same cation but different anions. So we're looking for one cation, 2 anions. Okay, an excess of HCl is added. Bubbles of carbon dioxide are given. So when you get bubbles of carbon dioxide, that's clearly a carbonate. Okay,
So that's clearly that which is breaking down. And so we can see what conclusion can be made from this, that the solution is colorless. So when is it colorless? The colorless part tells you that the cation does not have any transition metal ions there. So there is no transition metal ion. Okay. Give a test and observation to identify carbon dioxide. Now, we all remember that carbon dioxide turns lime water milky. But here, they're breaking it down. They're saying test separately बताएं or observation separately बताएं. So, we can say the test is pass through lime water. And observation is it turns milky. Okay? So, there are two steps here. So, हमने दोनों को बताना है. Very good, Yaya. Yes. Good luck, Safi, for your exam. I'm very hopeful आपका अच्छा grade आएगा. Identify the anion which reacts with HCl to produce carbon dioxide. So the anion is carbonate. Because they said identify, you can give the formula, you can give the name, कोई फर्क नहीं पड़ता. Alright. The colorless solution is divided into two parts. ठीक है. अब क्या कर रहा है वो? पहले उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है और उसको वाइट प्रेसिपिटेट मिला है. So हमारे पास 8 कैटायन है और उनमें से 3 वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं. बिकॉज 4 हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, 3 रेगुलर मेटल्स हैं और 1 अमोनियम है. सो द 3 वाइट प्रेसिपिटेट आर कैल्शियम, aluminum and zinc. And these two will dissolve and this one will not. And this is saying it is insoluble in excess. So this means calcium ion confirmed. Okay. Next, it contains nitrate ion. Nitrate का टेस्ट बहुत सिंपल है. First of all, add sodium hydroxide, aqueous, aluminum foil, and heat it. So this basically breaks the nitrate down, and so you will end up with ammonia gas coming out. And how do you confirm that there is ammonia gas? Really simple. Bubbles आएंगे, पहली बात तो ये. And secondly, ammonia का टेस्ट आप बता देंगे that there is a gas evolved that turns lime water blue. Oh, sorry, that turns litmus blue. So gas evolved, yeah, bubbles that turns litmus blue. So do you understand that अभी तक हमने दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स दिए हैं. So basically every time you see bubbles, effervescence, जो भी आप लिखोगे, you have to specify what gas it is. You have to give a confirmation कि कौन सी gas है. Okay. This is again very similar to the previous question. You have a solid L and L is dissolved in water and a colorless solution is formed. So the colorless solution confirms that there is no transition metal ion present. Okay. Alright. So that's important. You can also say that there is no transition metal, yeah, some other way to just convey that. और अब ये हमें कह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई आया है. So that's clearly white precipitate. So you see that every test corresponds to one observation and one conclusion. हर टेस्ट के साथ ऐसे है. अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से ये हो सकते हैं. तो इसका मतलब है precipitate dissolves या precipitate soluble या precipitate dissolves. दोनों में से कुछ भी आप बता सकते हैं. Similarly, it's saying that there is ammonium ion. You added sodium hydroxide and you heated it. Of course, ammonia is going to be released. Why? Because ammonium is acidic ion. So उसकी वजह से it will release H positive. वो H positive react कर जाएगा sodium hydroxide के साथ and ammonia will be released. So we'll say that gas released that turns litmus blue. अगर आपने पूरा नहीं लिखना, आप खाली अमोनिया लिख दो, that ammonia gas released. ठीक है. So आप इसको बता सकते हैं. By the way, this is 4 mark question. So we should mention the name ammonia. I think we should, yeah. 4 marks, है ना? So 1, 2, 3, and this is 4 definitely. Okay. L may contain aluminum or zinc ions, again white precipitate. And it's saying that zinc is there. So zinc, crazy cousin, it is the zinc part. So it dissolves. So precipitate soluble, yeah, precipitate dissolves.
chloride ions. Now here's the thing, all the anions apart from nitrate जब आप उनको टेस्ट करते हो आप एसिड ऐड करते हो. So यहाँ पे क्लोराइड है, will add dilute acid, usually dilute nitric acid ऐड करते हैं, ठीक है. एंड देन बिकॉज इट्स अ हेलोइड आयन, तो उसको टेस्ट करने के लिए सिल्वर आयन ऐड करते हैं. सिल्वर आयन के लिए आप कोई भी सिल्वर सॉल्युबल सिल्वर सॉल्ट जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर सकते हो, एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है. एंड दिस विल गिव यू अ वाइट प्रेसिपिटेट. हेलाइड्स में you have three options: chloride, bromide, iodide. This is white with silver ion, this is cream या off white, and this is yellow, ठीक है. So that's the color change. और ये notes आपको exam में given होंगे, but of course जितना आप practice करोगे उतना आपको फायदा होगा. So this worksheet is pretty straightforward, बहुत ज़्यादा इसमें variation नहीं आती है. So let's do some other questions. अब यहाँ पे भी we can clearly see कि aluminum ion है, white precipitate soluble in excess of what? Sodium hydroxide. So add sodium hydroxide, aqueous, ठीक है. Notes have been given in A levels forever, so it's just कि now they are taking the same thing here, because to be honest चीज़ों को memorize करना is no skill, ठीक है. In very few practical times you need to memorize skill things. हमारे पास गूगल है, हमारे पास बहुत से और टूल्स हैं. इन द रियल वर्ल्ड वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज थिंग्स एंड हाउ टू बी क्रिएटिव एंड हाउ टू मेक आवर स्किल्स बी यूजफुल. याद करने वाली चीज़ की कोई इतनी वैल्यू नहीं है. इट डजंट एंगेज योर माइंड मच. इट इज़ जस्ट एट द वेरी लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. सो एजुकेशनल वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा अक्सर नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने आपको नोट्स दिया है. ओके, या alright, acidify with dilute nitric acid and add silver nitrate. Make a note of this, guys. You have silver. Every time you get silver ion, you're testing for group 7. Every time you get barium ion, you're testing for sulfate or sulfide. So यहाँ पे we will get white precipitate for chloride. Okay. Similarly, over here we are getting light blue precipitate dissolving to give a dark blue solution. That is copper ion. And sulfate का test क्या है? As I said, you add acidify with dilute nitric acid. Dilute, not concentrated. Hold on. Barium nitrate. Barium nitrate will make sure कि आप इसको जब टेस्ट करें, so you get your final thing out. Hold on just a minute. Okay. Now this is going to give me white precipitate. The thing about this is कि अब सल्फेट और सल्फाइड दोनों आते हैं. फर्क क्या है कि सल्फाइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बट सल्फेट कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. तो ये इन दोनों में एक मेन फर्क है. Sorry. Yeah, you're absolutely right that for sulfite we use potassium manganate because sulfite can be oxidized. बट सल्फाइड भी बेरियम के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देता है. इनफैक्ट एसिड के साथ वो डिजोल्व हो जाता है और सल्फेट डिजोल्व नहीं होता. दैट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव ओवर हियर, ठीक है. लेकिन वो इनका क्लियरली मतलब टेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो एग्जाम में. ओके. No, the notes will not be given to you in theory paper and paper 1. They will in MCQ paper they will not be given. ठीक है. I'm not saying कि सारे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे. इट्स जस्ट कि उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस लाए हैं. Obviously eventually they will add more creative solutions there. Alright. To a portion of alcinite in a boiling tube, add dilute HCl until all the solid has dissolved, and the solid dissolves and gives us effervescence. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. तो इसका मतलब है ये कोई ऐसा कार्बोनेट है जो कि soluble है. So our conclusion is that I'm getting carbonate ion because I'm getting
this lime water goes milky, that's the gas. To a portion of this add dilute sulfuric acid and you're getting barium. अब देखो आज तक हम क्या कर रहे थे, हम सल्फेट को टेस्ट करने के लिए बेरियम ऐड कर रहे थे. अब उसने क्या किया कि उसने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, उसने सल्फेट खुद ऐड किया और हमने बेरियम को बताना, इवन तो बेरियम सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो उसने टेस्ट किया वो तो है ना कि बेरियम नाइट्रेट सल्फेट को वाइट करता है, तो सल्फेट बेरियम को भी तो वाइट करेगा. सो देयर दे आर यूजिंग दैट आइडिया. सो यहाँ पे ये बिल्कुल उसने ऑपोजिट तरीके से आपके साथ किया है. सो यू आर स्टिल गेटिंग वाइट प्रेसिपिटेट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कनेक्ट कि बेरियम ऐड करके सल्फेट का टेस्ट हो रहा है, तो सल्फेट ऐड करके बेरियम का भी तो टेस्ट हो सकता है. ऑलराइट, या तो पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ऐड aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड until in excess, और डायरेक्ट उसने एक्सेस कर दिया एंड यू आर गेटिंग कैल्शियम आयन. सो विल से दैट वाइट प्रेसिपिटेट insoluble in excess, क्योंकि अगर उसने एक्सेस खुद से ऐड किया तो हमें एक्सेस तक की सारी ऑब्जर्वेशन करनी. आपने पहले फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए, वाइट प्रेसिपिटेट बना, फिर आप उसको करते गए, इवेंचुअली वो सारे के सारे डिसॉल्व हो गए. एंड इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, सो दैट्स अ बिग हिंट फॉर यू. टू अ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन ऐड aqueous अमोनिया, एंड अमोनिया के साथ वी नो that calcium does not react, so no visible change, no visible reaction. That is what we will write. ठीक है. Which question are you talking about? What changes? Okay, so this is it. आगे चलते हैं. A student is provided with 3 solutions. ठीक है. Aqueous zinc sulfate, aqueous copper sulfate, calcium nitrate. अब जरा सोचें. Zinc सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में डिसॉल्व होता है. कॉपर, इनफैक्ट जिंक अमोनियम में भी डिसॉल्व होता है. कॉपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक्सेस में ब्लू प्रेसिपिटेट देगा जो कि डिसॉल्व नहीं होगा. अमोनिया की एक्सेस में ब्लू प्रेसिपिटेट देगा जो डिसॉल्व होकर डार्क ब्लू सोल्यूशन देगा. कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट, डजंट डिसॉल्व. अमोनियम के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता. अच्छा, अब सल्फेट को देखते हैं. सल्फेट, इसके बारे में मल्टीपल चीजें मैं आपको बताता हूँ. पहली बात, इट रिएक्ट्स विद बेरियम आयन, मेक्स वाइट प्रेसिपिटेट. दूसरी बात, इट रिएक्ट्स विद दैट प्रेसिपिटेट डजंट डिसॉल्व इन HCl. अगर कोई भी डाइल्यूट एसिड आप उसमें ज्यादा डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा. यही वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम के साथ सल्फाइड बनाएगा जो कि एसिड के साथ डिसॉल्व हो जाता है. दूसरी बात, सल्फेट को आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो KMnO4 का कलर चेंज नहीं होगा. नाउ दिस इज अ नेगेटिव टेस्ट, इट्स नॉट अ पॉजिटिव टेस्ट. आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि ये है, लेकिन आप ये तो यूज कर सकते हैं ना कि KMnO4 के साथ सल्फाइट ऑक्सीडाइज होता है, KMnO4 कलरलेस होता है. ठीक है, पर्पल से कलरलेस विद सल्फाइट होता है, सल्फेट नहीं होता. सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फाइड एंड सल्फेट यूजिंग KMnO4. ठीक है, सो ये इसके बारे में एक टेस्ट है. अच्छा, आगे चलते हैं. एक्वस कैल्शियम नाइट्रेट. नाइट्रेट का टेस्ट क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम फॉयल ऐड करेंगे, इट विल गिव अस अमोनिया गैस जो कि लाइम वाटर को लिटमस को ब्लू करती है. ओके, सो इसने हमारे पास मल्टीपल टेस्ट किए हैं. लेट्स सी. कुछ टेस्ट ऑब्वियसली हर टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है कुछ टेस्ट का रिजल्ट हो ही ना. अब देखते हैं, हमने स्पेसिफाई करना है. जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट कुछ भी नहीं करेगा, जिंक रिएक्ट करेगा, तो वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीवीटी डिसॉल्व्स. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, अच्छा ये डिसॉल्व्स तो इन एक्सेस में आ गया ना, सो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स. एक्वस बेरियम नाइट्रेट, बेरियम के साथ जिंक ने कुछ नहीं करना है, बट सल्फेट विल गिव अस वाइट प्रेसिपिटेट. Why are we adding nitric acid? Because we need to make sure. देखें, let's suppose कोई नाइट्रिक एसिड नहीं ऐड करता, अब अगर कार्बोनेट हुआ ना तो वो भी वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा, बिकॉज बेरियम कार्बोनेट भी वाइट होता है. सो हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं होगी कि बेरियम कार्बोनेट है या बेरियम सल्फेट है, हमें कैसे पता. सो टू मेक श्योर कि कार्बोनेट नहीं है तो हम हमेशा सबसे पहले हर चीज में कार्बोनेट का टेस्ट कर लेते हैं. सही है. सो वी ऑलवेज एसिडिफाई टू गेट कार्बोनेट. हाँ, देयर इज वन केस जहां पे हम नहीं करते, दैट इज व्हेन यू यूजिंग नाइट्रेट. क्यों? नाइट्रेट को टेस्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए. सोडियम हाइड्रोक्साइड में एसिड डालोगे वो तो सारा टेस्ट ही बेकार हो जाना, because sodium hydroxide is alkali, acid is acid, they will neutralize. So for nitrate we add sodium hydroxide and alkali, but for every other anion we first check कि कहीं ये cation कहीं ये carbonate तो नहीं है, so we add a small amount of acid. Bubbles आ गए तो we wait until all the bubbles are gone ताकि carbonate
डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर बबल्स नहीं आते वी ऐड द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, एल्यूमिनम एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो नाइट्रेट का टेस्ट होता है ये, सो नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वेट अ मिनट, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले भी आपने ऐड किया था, ठीक है, तो पहले जब आपने ऐड किया था तो वाइट प्रेसिपिटेट आया था ना, तो यहां पर भी वाइट प्रेसिपिटेट आना नहीं चाहिए। देखें, प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपने जैसे ही उसको हीट करना है तो वो, और आपने अलॉट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, वो डिजोल्व हो जाएगा, आपको कोई नो विजिबल चेंज या नो रिएक्शन ओवरऑल नजर आएगा। वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा अगर आप बहुत स्लोली ये रिएक्शन करते हो, लेकिन इवेंचुअली वो भी डिजोल्व हो जाएगा। कॉपर 2 सल्फेट, अगेन सल्फेट ने कुछ भी नहीं करना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कॉपर ने करना है, ब्लू प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन डिसॉल्व करता है? क्रेजी, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जिंक। बेरियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डू यू हैव सल्फेट? यस, तो वाइट प्रेसिपिटेट, एंड दैट मीन्स नो रिएक्शन हेयर एज वेल, क्योंकि देखो एनाइंस तो सेम ही है ना। कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड will give us white precipitate, calcium hydroxide is white, and then that will be insoluble। ठीक है, and you have बेरियम नाइट्रेट ऐड कर रहे हो, कुछ भी नहीं होना, बेरियम नाइट्रेट को नाइट्रेट में ऐड करोगे, कुछ भी नहीं होना, सो नो रिएक्शन। लेकिन जब आप एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, नाइट्रेट विल ब्रेक डाउन and it will give you ammonia gas, and you need to give the name, not the formula. And how do you test? You pass over litmus, so pass over blue litmus, या खाली blue litmus लिख दो, red litmus, sorry, my bad, so red litmus goes blue। ठीक है, so हमें पता चल गया। okay, okay, this is very similar to this one as well। देखते हैं, so with sodium hydroxide, नाइट्रेट ने तो कुछ नहीं करना, chromium 3 will go green, so green precipitate। ठीक है, chromium 3 is green। there are अगर आपने पुराने पास्ट पेपर्स किए हो ना, तो उनमें ऑरेंज टू ग्रीन पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज आता है, एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ chromium 3 इन देयर, ऑल्दो अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट हमारे पास पुराने पेपर्स में वो है। Sodium hydroxide in excess, precipitate dissolves. Again, crazy, the Cr in there is because of this, sodium hydroxide में dissolve होता है। फ्लेम टेस्ट के ऊपर कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल है कि आपने बर्न करना है और उसको याद कैसे करना है। तो उसको याद करने के लिए आपके पास क्या है, यू हैव द व्हाट यू कॉल, अभी बता देता हूँ बल्कि। सो फ्लेम टेस्ट, गौर से सुना है एवरीबडी, पे अटेंशन। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ये क्या है? दिस इज ऑल रेनबो कलर्स। तो अब जरा इसको याद करते हैं। लिथियम इज रेड, कैल्शियम इज ऑरेंज, सोडियम इज येलो, कॉपर इज ब्लू ग्रीन। ठीक है, इनफैक्ट कॉपर को बाद में देखते हैं, ब्लू है। बेरियम इज ब्लू ग्रीन, लाइट ग्रीन बल्कि। सो बेरियम इज ग्रीन, कॉपर इज ब्लू ग्रीन, और फिर हमारे पास वायलेट तो नहीं है, बट वायलेट के क्लोज एक कलर है लाइलेक, एंड दैट कलर इज देयर, एंड द लाइलेक कलर इज फॉर पोटेशियम। सो जस्ट यूज द रेनबो कलर्स। ठीक है, एंड इफ यू कैन रिमेंबर दिस ऑर्डर फॉर द रेनबो कलर्स, यू नो व्हाट इट इज, बहुत आसान है। सो लिथियम फॉर रेड, कैल्शियम फॉर ऑरेंज, सोडियम फॉर येलो, बेरियम फॉर ग्रीन, कॉपर फॉर ब्लू ग्रीन, एंड पोटेशियम फॉर लाइलेक। सो आपके पास 7 कलर्स हैं, सॉरी 6 कलर्स हैं, और 6 ही आना है और कैटायंस हैं। सो फ्लेम्स करना याद बहुत ही आसान है। ठीक है, आई होप दैट स्पेसिफाइज दिस। और वैसे भी फ्लेम्स पेपर 4 में तो गिवन ही होंगे। अच्छा, वापस इस पे आ जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो। सिल्वर इज क्लियरली अ हिंट के ग्रुप 7 का टेस्ट करो। आपके पास है ग्रुप 7? नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन।
Yes, of course you have to memorize identification for paper 2 and paper 1. आई गेस फ्लेम टेस्ट के ऊपर एक एमसीक्यू आ जाएगा, 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे बहुत ज़्यादा हुए तो, 1-2 मार्क, 3-4 मार्क्स ओवरऑल पेपर में आई थिंक 4-5 मार्क्स का आएगा तीनों पेपर्स मिला के. ठीक है. Okay, so this gas is ammonia because you have a nitrate ion. The test is red litmus and the observation goes blue. Okay, there you go. Aqueous iron 2 chloride, iron 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा और वो डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल. And then because you have silver here, the silver ion is telling us कि आप group 7 को टेस्ट कर रहे हो तो वो तो क्लोराइड है. So you have to make note of these things. Silver ion for group 7 test, barium for sulfate or sulfide. ठीक है, you have to make these connections. So here you will see white precipitate. And do you have nitrate? No, so no reaction. Organic की वर्कशीट आपको चाहिए, I'll post the link. Iron 3 chloride is red precipitate. You can also say red brown precipitate, which is again insoluble. So precipitate insoluble. You have a chloride, so white precipitate. अभी देखें फ्री के मार्क्स हैं and no reaction. ठीक है, all right. ओके, व्हाट्स हैपनिंग हियर, नाइट्रेट को टेस्ट कर रहा है. सो ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, अमोनिया इवॉल्व्ड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू एंड सो वी नो दैट वी हैव नाइट्रेट आयन. अब देखो कभी वो आपको सेपरेट कॉलम दे देता है, कभी कंबाइन कर देता है, बट आ जाके टेस्ट वही है, वही आपने रिप्रोड्यूस करना है. ठीक है. ओके, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड. आप इसको एफरवेसेंस भी बोल सकते हो, बबल्स भी कह सकते हो. टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. तो बस ये हो गया. अच्छा, यहाँ पे नाइट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, उसने पहले बताया हुआ. क्या हो गया उमर, हौसला करो, नहीं होता अभी, बहुत वक्त है, हो जाएगा. ओके, आयरन 3 रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल. जी, इट विल बी गिवन इन पेपर 4. क्या हो गया? अच्छा, they test the soil by shaking it with universal indicator solution, then leaving it to stand. The pH is 6. Shade the color of universal indicator at pH 6. अब universal indicator आपको पता है कि न्यूट्रल पे ग्रीन होता है. दैट्स द मेन थिंग दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर. ठीक है, तो अगर न्यूट्रल पे ग्रीन है तो यहाँ पे आप उसको येलो बोल दो. ठीक है, सो दैट्स गुड इनफ. ओके, scientists believe that some fertilizer contains iodide ions that has been added to the soil. ठीक है. Describe how they could test the solution made up for the soil for the presence of iodide ion. अभी इतनी जगह उसने दी हुई है कि स्टूडेंट देखेगा और वो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं मैंने क्या टेस्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत से टेस्ट हो सकते हैं आयोडाइड के, लेकिन हमारे पास बहुत सिंपल सा जो टेस्ट है दैट इज ग्रुप 7 है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो, जस्ट टू बी श्योर पहले एसिड ऐड कर दो. So acidify with dilute nitric acid. Nitric acid क्यों ऐड करते हैं? Because no matter what the cation is, nitric acid कभी precipitate नहीं बनाएगा. तो आपका जो भी precipitate आ रहा है वो anion की वजह से आ रहा है, cation की वजह से नहीं आ रहा है. That's why we add nitric acid. Then add silver nitrate. अब nitrate क्यों ऐड कर रहे हैं? Because already nitrate ऐड कर चुके हैं. तो again it doesn't compete with each other. All right. Yes, universal indicator is in the syllabus. In fact, नया एक indicator इस दफा ऐड हुआ है, thymophthalein, जो कि colorless in acid and blue in base होता है.
Okay, result. You are adding silver to iodide, you are getting yellow precipitate. What do you mean by, so the question is that what's the original color of methyl orange? What do you mean by original color? Methyl orange या रेड या पिंक होगा, रेड पिंक एक ही बात है, या वो येलो होगा इन एल्कली फॉर अ वेरी स्मॉल रेंज क्लोज टू 7 वो ऑरेंज होता है, बट हम उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओ लेवल से IGCSE में वी विल नॉट राइट दैट, क्योंकि वो कुछ वीक एसिड के साथ भी ऑरेंज है, वीक एल्कली के साथ भी ऑरेंज है, हमें क्या पता कि वो चीज़ की pH क्या है। सो इस वजह से we keep it red or pink for acids and yellow for alkali. Okay, moving on. Okay, this question. A solution contains one cation and two different anions. ठीक है, iron 2 है तो इसका मतलब है green precipitate, ठीक है। अब वो कह रहा है गैस इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो इससे हमारी ऑब्जर्वेशन यानी कि हमारे कंक्लूजन्स क्या हैं। सो हमारा कंक्लूजन ये है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और कार्बोनेट आयन है, ठीक है। दैट्स आवर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो बस ये हमें पता चल गया। अच्छा, बेरियम नाइट्रेट ऐड किया, बेरियम मतलब सल्फेट या सल्फाइड। अब हमारे सिलेबस में सल्फेट ही है जो बेरियम के साथ हम टेस्ट करते हैं, तो वी कैन से सल्फेट SO4 with 2 negative. You can write sulfide and that will also be fine. Chloride ion is white with silver. ऑफ वाइट कलर हमारा ब्रोमाइड के साथ आता है, ऑल्दो इफ यू प्रैक्टिकली डू इट तो उनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो वी डू अनदर टेस्ट, जब भी हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं ना, उसको करने के एक और हमारे पास टेस्ट है यूजिंग अमोनिया, बट वी डोंट नीड टू गेट इनटू दैट इन ओ लेवल्स और IGCSE. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्वेश्चन यूजिंग दिस टॉपिक। सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सो फोकस गाइस। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, interesting stuff. You have 2 cations 1 anion, ठीक है। salt exist कर सकते हैं, so you have it in a water soluble compound. How do we know it's water soluble? वो ना भी बताता तो हमें पता था, because this is snap salt, sodium nitrate ammonium potassium. Any salt that has any one of them it will be soluble. sodium nitrate ammonium potassium. so हमारे पास अमोनियम है, clearly अमोनियम एंड नाइट्रेट की वजह से हमें नजर आ रहा है कि ये सॉल्युबल होगा। डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई कैल्शियम अमोनियम एंड नाइट्रेट आयन। इंटरेस्टिंगली दीज रिजल्ट्स डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। सो हम सबको अलग-अलग कर देंगे। सो हम विल स्टार्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल। सो ऐड फ्यू ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous, ठीक है। you might want to warm it, ठीक है। so you will see bubbles of gas that turns red litmus blue, ठीक है। so this confirms ammonium. अब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले से ऐड किया हुआ है, सो वाइट प्रेसिपिटेट दैट डजंट डिसॉल्व इन एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कैल्शियम आयन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या था, नाइट्रेट। Add aluminum foil, ठीक है, sodium hydroxide and warm it, ठीक है। ammonia gas released, और अमोनिया के टेस्ट वापस लिख सकते हो आप, that turns red litmus blue, this confirms नाइट्रेट, ठीक है। सो यू सी कि तीनों टेस्ट बस आपने लिख देने हैं वन आफ्टर अनदर, इवन इफ दे ओवरलैप, तीनों में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, बट जस्ट राइट इट डाउन। अच्छा, क्वेश्चन इज कि सॉल्ट सॉल्युबिलिटी कैसे याद करें। बहुत आसान है, अभी सुनने बताने लगा तो गौर से सुनना। सो गाइस पे अटेंशन, एनी टाइम यू गेट
any random salt, first thing to check, is it snap? So snap salts are always soluble. So अगर कोई भी आपको salt मिलता है, check, is it snap? है, move on, it is soluble. Snap क्या है? Sodium, nitrate, ammonium, potassium. Okay, those are the 4 things snap. Okay, let's say snap नहीं है, अब क्या करें? Now test, does it have sulfate? If it has sulfate, तो फिर please call back. Lead, calcium, barium are insoluble. Okay, so lead, calcium, barium insoluble. अगर सल्फेट भी नहीं है, देन चेक, डज इट हैव हैलाइड, यानी ग्रुप 7 है उसके साथ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, कुछ भी है, सिल्वर, मर्करी, लेड. ये मेरे बड़े सीनियर सर हैं, उन्होंने, सर नदीम, उन्होंने इसके ऊपर बड़े एक मजे का बताया हुआ है कि आज होगी पढ़ाई, आज होगी पढ़ाई. So इससे आप याद कर सकते हो. So thanks to Sir Nadeem for this. So this is insoluble. ठीक है. And for this I would like to give a shout out to 2 of my brilliant students, Amin and Meher, who came up with the idea that please call back. Okay. Yeah. So now you know कि अगर सल्फेट है तो प्लीज कॉल बैक इज इनसॉल्युबल, और अगर हैलाइड है तो ये इनसॉल्युबल है, इसके अलावा सॉल्युबल है. अच्छा, अब थर्ड थिंग, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स आर पार्शियली सॉल्युबल. तो ये हमें 4th पॉइंट हो गया. एंड देन 5th पॉइंट, all other salts are insoluble. वो कार्बोनेट है, वो फॉस्फेट है, वो ऑक्साइड है, वो हाइड्रोक्साइड है, वो कुछ भी है, आपने उसे इनसॉल्युबल एज्यूम करना. दिस थिंग विल वर्क फॉर ऑल द सिलेबाई दैट आर टॉट इन पाकिस्तान. सिर्फ एपी केमिस्ट्री जो यूएस का कोर्स है उसमें इसके अलावा हम पढ़ाते हैं, वरना जितने सिलेबस हैं, चाहे वो एडएक्सएल है, चाहे वो एमवाईपी है, चाहे वो आपके पास इवन डीपी के बहुत से लेवल तक, और इवन ए लेवल्स में भी काफ़ी हद तक दिस वर्क्स. ठीक है, ओ लेवल्स एंड आईजीसीएस तो है ही है. सो दीज 5 पॉइंट्स दे आर एक्सीलेंट. इससे आप काफ़ी याद कर लोगे. एएस में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं, डीपी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, खासतौर पे इस पॉइंट पे, बट अदर देन दैट दिस विल वर्क. दिस इज यूनिवर्सल. ओके. यूके में क्या पढ़ाते हैं? यूके में 6-7 तरह के ओ लेवल्स होते हैं. AQA है, एडएक्सएल है, JWAC है, OCRA, OCRB, काफ़ी हैं. ठीक है. ओके, कमिंग बैक टू दिस. बहुत इधर उधर के सवाल पूछते हो, चलो खैर गपशप लगी रहती है. Q is dissolved in water, a colorless solution is formed. This confirms कि transition metal isn't present. Chromium 3 or iron 2, green precipitate और green precipitate insoluble. This confirms कि हमारे पास iron 2 है, chromium नहीं है. Gas turns damp litmus blue, so ये हमारे पास ammonia gas है. और what ion does it confirm? Ammonium ion. Sulfate है, पहले acidify करेंगे, acidify with dilute nitric acid and then add barium nitrate. Either write the full name or write the correct formula. गलत formula नहीं लिखना, ठीक है. So it will give you white precipitate. ठीक है.
ऑलराइट, ये भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है. A colored solution is formed confirms that transition metal present. Wait a minute. Last one में हमने क्या किया? Oh, we had a colored solution, so transition metal is present here. Guys, please correct this. पिछले क्वेश्चन में डाइल्यूट की शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं. यस, पीपीटी लिख सकते हैं, DIL फॉर डाइल्यूट लिख सकते हैं. इट विल बी एक्सेप्टेबल. ठीक है, बट डाइल्यूट में आई वुड सजेस्ट कि पूरा लिखो, क्योंकि डाइल्यूट इज नॉट दैट यूनिवर्सल. मार्क्स की में मैंने नहीं देखी है. ठीक है, एक्वस यूज किया है, पीपीटी यूज किया है. ठीक है, अरम व्हाट्स द क्वेश्चन? Thank you. Yes, thank you for pointing it out. Okay. You have green precipitate. Yes. Again, green precipitate which doesn't dissolve. So precipitate insoluble. ठीक है. And now you're adding sodium hydroxide. पहले आपने ammonium hydroxide add किया था. So again you'll get green precipitate, but this time iron 2 will not dissolve. Chromium है, इसका मतलब है PPT dissolves. या PPT soluble. ठीक है, ये दोनों हम लिख सकते हैं. अगला है गैस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. वापस देखें, बहुत सी रेपिटेशन आ रही है. सो दिस इज अमोनिया दैट इज कमिंग फ्रॉम ammonium ion. And lastly, we have sulfate. We have already done this. So now we are done with most of the questions. Let me see. I think बाकी भी similar हैं, and I would suggest कि I leave these remaining questions for you as a worksheet. They are really simple. मुश्किल नहीं है. There are just 8 more questions left. So I would suggest कि you attempt this. The worksheets link is in the description. And yeah, like always, thank you for watching. Do subscribe. In fact, I would suggest कि आज एक काम करो. Ask your friends to visit this, watch these, and I hope that उनको भी इससे फ़ायदा हो. So everybody refer at least one of your friends. Alright. Good luck for your mock exam. I will inshallah see you in the next class. Take care. Allah Hafiz.